Okay, screen and audio clear है? Yes, sir. All right. Okay, so let's start. In the last lecture, we had discussed about the function of operating system. First, we have already discussed that was initial loading of program, in which we have already discussed that what kind of programs they have been loaded before starting the operating system. So in the initial loading of programs, that means actually it load the kernel into the primary memory. Kernel is nothing, just a core part of operating system, which consists of files which are required for designing the GUI and commands. So we require two things. First, graphical user interface so that the user can interact with the operating system. And another thing which are required for interact both resources we have given by load. So IO.sys, it is a control inputs output devices. So if IO.sys loaded into the primary memory, that means user have authorized to control the input output devices. MS.sys, it provide the MS-DOS. That means it load Microsoft disk operating system. Config.sys, it is again a file. What it does for the user, it is configures the device drivers. So every hardware which is connected to the operating system, it can understand the device are working properly or not. So config.sys, it is very essential file while loading the kernel from secondary to primary memory. Command.com, it is again a file which loads command line interpreter. That means if you see the command.com, if you type the CMD, this is the command prompt. It is one kind of command interpreter. Here you can type any commands and execute the command. And you can access any resources which are available into the secondary devices. That's why it is called a command interpreter, which interpret your commands. Auto executable batch file sets the procedure the user wants the PC to perform automatically when it is booted. So batch is nothing, just a collection of related commands. The second function was process management functions. We know that we have running a number of processes simultaneously by using a single operating systems. Like currently I'm running a Microsoft Team and doc file, as well as I'm also running internet browser. So every process or every program which are resides into the secondary memory at the time of execution become the process. So that is the basic difference between program and process. Program is just a passive entity which are stored somewhere else in the hard disk. But the process is the running entity. It is an active entity. So operating system manage a lot of processes running by the user and operating system itself. Basically, there are two kind of processes. First, the process which are running by the user. That means if I am running the three program and these three program become the process, so user processes are those processes which are running by the users. But at the same time, operating system can also run the process. Now the second part was batch job is also kind of process. That means, as I told you in the last lecture, batch is nothing, just a related jobs. That means it is a collection of jobs which are related to each other. A time shared user program is a process. A system task such as spooling out to the printer also is a process.
Now, in this lecture, we will discuss the memory management function, which is a very important function of operating system. So let's get it started. If we declare any variables like integer age, so how age variable assigned to the memory, who will assign the memory to age variables, and how much memory assigned to the age variables. These are some questions maybe come into the mind. So first, how much memory assigned to the variable age? So it depends on the types of the data. If it is declared as an integer, that means integer occupy the 2 byte. So age will assign 2 byte. Suppose there is another variables like float, salary. That means salary is a variable which is of type float, and we know that it is a data type which required 4 byte to manage the data. So if any data comes into the salary variable, it will be represented in 4 bytes. That is 8 multiplied 4. 1 byte is equal to 8 bit. So total 8 multiplied 4, 32. So float variables required 32 bit in the primary memory. Integer variable required 16 bit to represent their self into the primary memory. Similarly, if we assign a character, for example, character ch, so it required 1 byte of memory. Similarly, float required 4 byte of memory, and integer required 2 byte of memory. So that is the requirement whenever you declare any program or any function or any procedure by using some source of code, sort of codes, your program requires some memory. That memory is given by the operating system to your program. So that is the question. Who will assign the memory? So answer will be operating system is responsible for allocating the memory to the variables. And how much memory will be assigned to the variables? So answer of this question will be it depends on the type of the variable. If it is integer type, it will be assigned 2 byte to the variable. If it is float type, it will be assigned 4 byte of memory. If it is character type, it will be assigned 1 byte of memory, right? Of character contained by the character array, like mostly you uh, declare a name character array which having size suppose 20. So what does it mean? It means name is a character array. So name is a character array which contain 20 byte of memory, right? So name is the character. Name is the variable name of type character which contain 20 character one by one. So it required a continuous memory blocks, and each block contain one character, right? So you can take input as a name by the user, and the name should contain at least 20 characters. It will not exceed from the 20 characters, otherwise it will hold the garbage value. So we are defining the limit. We are defining the upper limit, how much character we can access by the user. So here name is the character array which contain 20 byte of memory. So who will assign the 20 byte to the name variable? So answer is operating system assign the 20 byte to the name variable, and it will declare in the primary memory at particular locations with some permissions. So these are some memory management requirement which is done by the operating system.
Now keep track of memory, what parts are in use and by whom. Operating system also keeping track of memory. That means if you declare some variable, if you declare some procedure, then what part are is in use and by whom. And suppose those variables which are not using by the function or a procedure, it will be reclaim the memory. So allocation and deallocation is also allocation and deallocation is the responsibility of operating system. So in the allocation process, we are assigning the memory, and deallocation, that means we are running a procedure or a garbage collector which collect the memory from the variables. But one thing you have to keep in mind, garbage collector always works at the end of the program, at the end of the execution of the programs, right? It looks in the primary memory, there are some a lot of objects that has been created by the programs which are not currently used. So these objects must be reallocate the memory. It should be reclaim the memory. So if user done this task, then it's okay. Otherwise, operating system will deallocate all the objects. If multiprogramming decide which process gets it and how much. This is another task of operating system. If we are performing the multiprogramming, then our program required some memory. Then how much memory we required? So it depends on the program. So in the multi-programming system, there is again a very big management of memory, which is done by the operating system. Now recover memory when process no longer needs it or has been terminated. We know that if process has been terminated, that means it is no further use. So it should reclaim the memory also, right? That is why it is a recover memory when process no longer needs it. So once the process has been terminated, all the data structure should be reallocated memory to the operating system. That is actually the meaning of this statement. Now, fourth function of operating system is device management function. Now, what it does for the user, again, it makes the interface for user and hardware, right? So device management, that means we can connect number of devices with the operating system. Each device must have a device driver software. Once we install the device driver software into the operating system, then operating system recognizes that particular device, how it works. One of the purposes of an operating system is to hide the specialty or peculiarities of specific hardware devices from the user. Right? We are not interested that what is the programming code written into the mouse, how it works, how the keyboard is works, right? We are not interested. We are not interested to the programming of the hardware, but we are interested how they work. So it is
operating system function that manage the devices. Just we have to install the device driver software, then operating system start recognizing all the devices which is uses by the programmer. Now next is file management function. It is again a very essential function in which what we can do, we can create files and we can delete the files, right? Some operating system we provide the facilities to create a number of files simultaneously. In the disk operating system, you can create a single file at a time, but in Linux operating system, you can create n number of files simultaneously in one shot. In the same way, we can delete a single file and we can delete number of files in one shot. So there are a lot of commands provided by the multi-user operating systems which we can perform in this way. Now in the same way as we can perform the creation and deletion operation onto the files, we can also perform the creation and deletion operation on directory also. That means we can create a single directory by using a single command, or we can create a number of directories by using a single command. Similarly, we can delete a single directory and we can also delete a number of directory by using a single command. So in the same way, disk operating system or Windows provide us a facility for deleting a directory, but Linux provides a single command for creating or deleting a number of directory in one shot. Support of primitive for manipulating file. That means if you want to change anything in the file or directory, if you are the owner of the files or directory, you can do these things. That means supports of primitives for manipulating files and directories. Comes into the file management function of the operating system. Now backup of the files on stable storage media. What does it mean? Operating system provide you a facility. That means you can take a backup of your files, right? So backup of files on a stable storage media. Keep track of resource, its location, use, status, etc. These collective facilities are often called the file system. So operating system will track how many resources are using, what is its location, whom used by the location, what is the status of resources, etc. Now these collective facilities are often called file system. Now the sixth function of operating system is secondary storage management function. That means we are talking about the hard disk or floppy disk, CD, DVD, but mostly we are talking about hard disk. The main purpose of a system is to execute program. These programs with the data they access must be in primary memory, and the primary memory is too small in the size. So it is recommended that all the data in program should be swept out or swept in at the time of execution. Now, what is the meaning? So the main purpose of operating system or a computer system is to execute the programs. We know that program resides in hard disk. So somehow we sweep in the programs which are resides on the hard disk. We have to transfer that program from hard disk to primary memory.
then it will execute by the CPU, right? So this program with the data, the access must be in primary memory. Size of primary memory as which are currently executed by the CPU. So it is recommended that all the data and program which are not used by the CPU must be transferred from the primary memory to hard disk. So in this way, there are two kind of processes continuously done by CPU. First is swap and the second one is swap in. What is swap out? So transferring of process data from primary memory to hard disk. And is data from hard disk to RAM or a primary memory. So let's understand this. Secondary memory management. There is a hard disk. सर आपकी आवाज ना बीच बीच में नहीं आ रही है. Okay. Network issue की problem. Okay, let's suppose it is a hard disk. And here some terms. So it is a program one, program number 3, and so on. Now that is our primary memory. So contain only those programs which are currently being executed. Yes. सर स्क्रीन पॉज है. Okay, now it is okay. Yes, sir. No, Now it no sir. नो सर, स्क्रीन विजिबल है बट वो जो फंक्शन है ना वहीं पे. is happening due to the bad quality of internet. Just wait for some time. ओके. It will resume the memories.
So I design a hard disk which contain three program, program 2 and program 3. As I told you, it is a passive entity. So all programs sites in secondary memory said to be a passive entity. These are but we want to run this program. Whenever user execute the commands. Now, at the time of execution, program become process. So program 1 become process. Process number 1 is known as process ID. We refer it by PID with some number. Let's suppose it is a number 1. So process ID is 1. सर That means अभी भी सर नेक्स्ट पेज हो नहीं दिख रहा है सर. now it is visible. नो सर. Okay, check it again. Now it's visible. No, sir. नो सर अभी भी सर कुछ No, नहीं sir. आ रहा है. नहीं वो visible अभी भी. नो सर नहीं दिख रहा है. सभी के साथ ये इशू हो रहा है. Yes, sir. Yes, sir. यश, Yes, sir. गायत्री. Yes, sir. No, sir. लोगों ने अभी नहीं स्क्रीन दिखने शेयर की लगी. है नोटपैड की.
Now it is visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's continue. Okay. So these are some which are resides in the hard disk, and as far as the process is concerned, at the time of execution of program is become the process. Program 1 transfer from from hard disk to primary memory, it becomes the process. While executing of this process, CPU is called, and program must have its own context, which contain three things: text, data, and stake. Combinedly, this is called context of the data. Context of process. Will trans according to the currently running by the CPU memory transferred from the primary memory to hard disk. So there are two kind of functions which done this kind of task. That means one function which load or transfer the data from secondary to primary. This is called in. It's one kind of process called swap in which the program resides into the hard disk will transfer into primary memory. That is called swap in process. And another is, let's draw some programs. Let's suppose it is a program number 2, program number 4, which is being currently executed by the CPU, and after execution it is stay in the primary memory, but no further or no longer used by the CPU. So this program is also having some process ID. The process ID is 2, and this process also having its own context, text, data, stake region. But since it is not since it is not used by the CPU currently, it will be transferred from hard disk from primary memory to hard disk. So there is again process. There is again a second process called swap out, and what it does for the user, it will transfer the program. It will transfer the entire context of the process, TDS, text, data, and stake, from from primary memory to secondary memory. Let's suppose it is a program number 4. So this is actually done by the operating system, and it's called secondary memory management.
Now, next is network management function. A distributed system is a collection of processors that do not share memory, peripheral devices, or a clock. So distributed system means a system which are in the form of scatter. Let's understand these things. Distributed computer system. There are a lot of computers. At different locations, and it is connected with the internet. सो इंटरनेट से अगर कई सारे सिस्टम एक साथ कनेक्ट होते हैं उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. दिस इज आवर फर्स्ट पीसी, दिस इज आवर सेकंड पीसी, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन and sixth one. So a distributed system is a collection of processor. Why it is called a collection of processor? Because every PC having a single processor. It will have the CPU number one. Let's suppose it must have a CPU number two, CPU number three, right? And so on. So every distributed system must have a single processor, and if we collect a number of processors to make a distributed system, that means it is a collection of processors. But the most important thing is that do not share memory, peripheral devices, or a clock. So in the distributed system, every computer does not share it three things. And what does it? It will not share our clock pulse. It will not share our peripheral. That means input or output devices which are currently connected with the CPU. It will not share our peripheral devices. And as well as the third things, it will not share our memory also. तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जितने भी कंप्यूटर उससे कनेक्टेड होते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट, हर एक कंप्यूटर अपने क्लॉक पल्स, पेरिफेरल डिवाइसेस और मेमोरी को शेयर नहीं करते. वो केवल इंटरनेट पर अपनी पूरी जो सर्विसेज हैं उन्हीं को स्कैटर फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और हर एक पीसी उस सर्विस को जस्ट यूज करता है. Instead, each processor communicate with another through communication lines such as high-speed buses or telephone lines. यहाँ पर ये कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेगा? तो हो सकता है यहाँ पर एक कोई राउटर लगा हो और इस राउटर पर इस रेंज में ये सभी कंप्यूटर्स या पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आता हो. तो उस रेंज के कारण ये सभी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड रहेंगे
और अपनी जो सर्विसेज है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। जो भी इनको डेटा ट्रांसफ़र करना हो, डेटा को फेच करना हो, वो आसानी से फेच कर सकते हैं। या तो हो सकता है कि टेलीफोन लाइन के थ्रू, जिसको हम हाई स्पीड बसेस कहते हैं, उससे भी कनेक्टेड हो। तो दो तरीके हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए। वायरलेस मीडियम, जो कि हमने वाईफाई या राउटर लगाकर किया है, और सेकंड होता है डेडिकेटेड लाइन से उनको कनेक्ट करना। तो इसमें जो टेलीफोन लाइन होगी वो टेलीफोन लाइन से सभी कनेक्टेड होंगे। लेट्स सपोज ये है वो टेलीफोन लाइन, और इस टेलीफोन लाइन से सभी पीसी कनेक्टेड होंगे इस तरह से। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कंप्यूटर आपस में दो तरह से कनेक्ट हो सकते हैं, या तो वायरलेस मोड में या फिर वायर्ड मोड में। अगर वायरलेस होगा तो वहाँ पर कोई एक वाईफाई डिवाइस होगी, एक राउटर होगा जो कि उसको इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। और अगर टेलीफोन लाइन हुई तो उसे हम फिजिकल पाथ कहते हैं, जिसके एक पर्टिकुलर फिक्स बैंडविड्थ होगी, और उसी से वो इंटरनेट को शेयर करेगा। तो पहले जो इंटरनेट होता है राउटर से टेलीफोन लाइन में आएगा, और फिर टेलीफोन लाइन से जो जो कंप्यूटर कनेक्टेड होगा उस कंप्यूटर में इंटरनेट पहुंचेगा। तो ये एक स्मॉल इंट्रोडक्शन था कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्क की सर्विसेज को सपोर्ट करते हैं उन्हें हम नेटवर्क मैनेजमेंट फंक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। अब नेटवर्क मैनेजमेंट का मीनिंग ये होगा कि वो नेटवर्क को कैसे मैनेज करता है। अभी इसके पहले जो नेटवर्क को मैनेजमेंट करने वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो विंडो एंटी विंडो नेटवर्क मैनेजमेंट, आपने शायद ये नाम सुना हो, विंडोज एंटी। तो विंडोज एंटी नेटवर्क को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है और फुल फैसिलिटी के साथ उसको सपोर्ट करता है, और इसीलिए ये डिज़ाइन भी किया गया था कि नेटवर्क की सर्विसेज को हम प्रॉपर यूज़ कर पाएँ। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम विंडो एंटी बोलते थे, बट इसके बाद भी कई सारे वर्जन्स आ चुके हैं जो बहुत अच्छी तरीके से एक नेटवर्क को मैनेज करते हैं, रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। और नेटवर्क के अंदर की कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये भी आपको पता होनी चाहिए कि हाउ टू डिज़ाइन अ पैकेट। पैकेट एक बहुत छोटी एंटिटी है जो कि नेटवर्क में ट्रेवल करती है, या आप इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पैकेट क्या है। इट इज अ स्मॉल यूनिट which contain which contains users data। आप जो भी नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर करते हैं वो जो भी डेटा है वो बाइनरी फॉर्मेट में पैकेट के अंदर ही मूव करता है। यदि आप अपने मोबाइल से भी एक मैसेज ट्रांसफर करते हैं तो वो मैसेज का जो डेटा वो कई इसमें कन्वर्ट, पैकेट को कलेक्ट करके हम फ्रेम बनाते हैं और फिर फ्रेम में वो डेटा ट्रेवल करता है नेटवर्क में। तो क्योंकि ये नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क को मैनेज कर रहा है, तो नेटवर्क में होने वाले उस टर्मिनोलॉजी को भी वो मैनेज करेगा। तो ये नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी है पैकेट्स, फ्रेम, राउटर, स्विच, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ये सभी नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये क्लियर होता है कि पैकेट को किस तरह से डिज़ाइन करना है, क्या होगी, उस पैकेट को रूट कैसे प्रोवाइड करना है, उस पर राउटर जो भी लगा होगा वो उसे रूट प्रोवाइड करेगा। व्हाट शुड बी द पॉलिसीज ऑफ राउटिंग, किस पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो राउट करेगा। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के ही फंक्शन होते हैं कि नेटवर्क के बीच में
कंप्यूटर के आपस में किस तरह से डेटा को ट्रांसफर करना है पैकेट के फॉर्म में, पैकेट कैसे डिज़ाइन होगा, पैकेट की साइज़ क्या होगी, फ्रेम कैसे डिज़ाइन होगी, कितनी फ्रेम डिज़ाइन होगी, उन फ्रेम का नंबर क्या होगा, उसके हेडर में क्या होगा, उसके ट्रेलर में क्या होगा, आती है तो उस फ्रेम के अंदर किस तरह से उस एरर को रिजॉल्व कैसे करना, ये सब टर्मिनोलॉजी नेटवर्क मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आती है। नेक्स्ट होता है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। हमें पता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। फाइल्स या डायरेक्टरी हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाते हैं, वो हम बनाने की भी परमिशन देता है, डिलीट करने की भी परमिशन देता है। साथ ही साथ अगर उसके अंदर कुछ कॉन्फिडेंशियल वर्क है तो उसे वो प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी भी देता है। इसके लिए आप कई सारे एंटीवायरस भी यूज करते हो, जिसके कारण आपकी फाइल्स और डायरेक्टरी प्रोटेक्टेड रहती है। साथ ही साथ आपको अगर फाइल पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अप्लाई करनी है तो आप उसके ऊपर पासवर्ड भी डाल सकते हैं, उसको रीड ओनली मोड में भी बना सकते हो। तो अलग अलग तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमें सर्विसेज दी है, पॉलिसी दी है कि यदि हम उन सर्विसेज और पॉलिसी को यूज़ करते हैं तो हम अपनी जो रिसोर्सेस है, जो हम कंप्यूटर में काम करते हैं, जो फाइल्स बनाते हैं, मटेरियल बनाते हैं, उन सबको हम प्रॉपर सिक्योरिटी दे सकते हैं। यदि हमें किसी हार्डवेयर को भी एक्सेस करना हो तो आप उस हार्डवेयर के रिलेटेड पासवर्ड डाल सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि प्रिंटर को भी यूज़ न कर पाए, माउस को यूज़ न कर पाए, राइट, कीबोर्ड को यूज़ न कर पाए, तो इन हार्डवेयर की एक्सेसिंग पे भी आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। और यूज़र ऑथेंटिकेशन में भी आपको पता होगा कि जैसे ही सिस्टम बूट होता है तो वो यूज़र आईडी पासवर्ड मांगता है, लॉगिन मांगता है। तो ये सब क्रेडेंशियल्स है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। यदि आपके कंप्यूटर में कुछ कॉन्फिडेंशियल वर्क होता हो तो आप उसके अंदर लॉगिन डालते हो, यूज़र आईडी पासवर्ड डालते हो, और अगर वो वैलिड होता है तो ही वो यूज़र लॉगिन कर पाएगा और उसके रिसोर्सेज को देख पाएगा। और अगर यूज़र वैलिड है तो वो वैलिड यूज़र आईडी पासवर्ड डालेगा, बट अगर यूज़र इनवैलिड है तो उससे परमिशन नहीं मिलेगी उसके रिसोर्सेज को एक्सेस करने की, और वो इनवैलिड यूज़र कंसीडर होगा और उसे सिस्टम बाहर कर देगा। सो अलग अलग तरह से प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। इसी का नाम होता है कि ये किसका मैनेजमेंट है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इट परफॉर्म कंकरेंट एग्जीक्यूशन, एक साथ कई सारे एग्जीक्यूशन का होना विथ सिक्योरिटी, राइट। एक साथ कई सारे प्रोग्राम का चलना मल्टी प्रोग्रामिंग है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक प्रोग्राम का जो डेटा स्ट्रक्चर है वो आपस में कोलाइड कर जाए। सभी को अलग अलग लोकेशन पर सिक्योरिटी पर्पस से रखा जाता है प्राइमरी मेमोरी में, और सभी को वैलिड इनवैलिड मार्क किया जाता है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर किस यूज़र के लिए वैलिड है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर किस यूज़र के लिए वैलिड नहीं है। मैनेजमेंट ऑफ ईच प्रोसेस, सभी का इंडिविजुअल मैनेजमेंट होता है, सभी को प्राइमरी मेमोरी में अलग अलग लोकेशन मिलती है, सभी का एक फिजिकल एड्रेस होता है, उनका एक प्रॉपर सेगमेंट होता है, स्टार्टिंग एड्रेस क्लोजिंग एड्रेस ये प्रॉपर डिफाइंड होता है, ताकि कोई भी डेटा स्ट्रक्चर एक दूसरे के सेगमेंट में एंड न करे। और सभी डेटा का अपना टीडीएस होता है, तो उनको सेपरेट मैनेज करना भी जरूरी है। इट शुड नॉट बी डैमेज बाय अदर प्रोसेस, किसी भी एक प्रोसेस का डेटा स्ट्रक्चर किसी दूसरे प्रोसेस के थ्रू डैमेज नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम उसके ऊपर कुछ पॉलिसी एनफोर्स कर देते हैं ताकि उसका जो टेक्स्ट डेटा और स्टैक रीजन वो सिक्योर रहे, प्रोटेक्टेड रहे। एंड लास्ट होता है कमांड इंटरप्रिटेशन फंक्शन। इसके अकॉर्डिंग इट्स प्रोवाइड बेटर कलेक्शन ऑफ कमांड्स एंड कमांड इंटरप्रेटर टू द यूजर। जैसे मैंने आपको बताया कि बूटिंग प्रोसेस में कमांड्स के साथ साथ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए जो भी फाइल्स होती है वो भी लोड होती है। तो कमांड इंटरप्रिटेशन फंक्शन हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से मिलने वाली उन सभी कमांड्स का कलेक्शन होती है। सो इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स का कलेक्शन हमें प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम।
ताकि अगर GUI क्रैश होता हो या किसी भी वायरस के इफेक्ट के कारण अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्रैश हो जाता है और हम तब हमें कमांड्स को यूज़ करना और फिर हम कमांड्स को यूज़ करके हम अपने रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो हर वो काम जो आप माउस के क्लिकिंग पर या डबल क्लिक पर कर सकते हैं, वो सभी काम आप कमांड्स चलाकर भी कर सकते हैं और इसी का नाम होता है कमांड इंटरप्रिटेशन फंक्शन। जैसे आपको एक फाइल खोलनी है तो आप जिससे आप माउस पे जाके माउस को यूज़ करके आप माय कंप्यूटर में जाके किसी भी फाइल को क्लिक करते हो तो आसानी से फाइल खुल जाती है। इसी तरह से आप डॉस में भी वो परमिशन दी है कि आप डॉस की कमांड चलाकर भी किसी भी फाइल को आप ओपन कर सकते हैं और ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम ने दी है, चाहे वो सिंगल यूज़र हो या मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हो। सभी में कमांड इंटरप्रेटर अवेलेबल होता है और कमांड इंटरप्रेटर के थ्रू वो हमारी कमांड्स को इंटरप्रेट करता है, समझता है और जो भी रिसोर्स हम एक्सेस करना चाहते हैं वो हमें प्रोवाइड करता है। तो ये थे टोटल 10 फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हमने डिस्कस किए। एक बार हम फिर से उसको रिवाइज कर देते हैं कि वो कौन कौन से 10 फंक्शन है। इसमें से कोई भी आपको 4 से 5 फंक्शन प्रॉपरली तैयार करना है क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट अबाउट द इनिशियल लोडिंग ऑफ प्रोग्राम, व्हाट इज बूट, व्हाट इज द बूटिंग ऑफ द प्रोसेस, बूटिंग ऑफ द कर्नल, booting of the operating system, right? Process management function, memory management function, device management function, file management function, secondary memory management function, network management, protection, security management, command interpretation। तो ये इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और एक कॉमन क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब से आपको उसको मैनेज करना होगा। ये मैक्सिमम है कि 7 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको मिनिमम 7 से 8 फंक्शन बताने होंगे। So this is all about the today's lecture. In the next lecture, we will discuss some another point, evolution of operating system. That means the development of operating system. पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हुआ करते थे और आज के जो रियल टाइम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से काम करते हैं। So in the next lecture, we will discuss the next topic. यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन करें। ओके, सो मैं सेशन क्लोज करता हूँ। थैंक यू सो मच।